Now, the Aam Aadmi Party versus BJP protests have erupted once again in the national capital. In fact, Aam Aadmi Party protesters are marching towards the BJP headquarters as we speak. We will cut out to these visuals, as you can see on your screens, where this is a big showdown over the mayoral polls that have yet not been able to take place in the national capital, despite the victory that Aam Aadmi Party had in the MCD polls. However, when it comes to the selection of the mayor face, that hasn't been done. We had seen how there were scenes of scuffle inside the Delhi Assembly on Friday. This is now actually erupted in the streets, where there are respective protests that are happening by members of the Aam Aadmi Party and also by the members of the BJP. Taking this across to my colleagues on ground, Siddhant is joining me, and also joining me is Arun Dhanta. Siddhant, I'll come to you first. First of all, take us through the situation on ground. Where exactly are you standing? And of course, these protests, now that they have gone onto the streets, this is going to disrupt the traffic and everything else, considering we're talking about Monday morning, where people are all out on the roads going about their work. Well, definitely, and in fact, I would like to highlight that first. You can see this entire stretch which connects ITO to Connaught Place. You know, the entire stretch has been blocked by Delhi police because of the ongoing protest, and no vehicle is being allowed to come on Deen Dayal Upadhyay Marg. This is only because of the protest which is currently taking place outside Aam Aadmi Party headquarters. Now, the initial plan of Aam Aadmi Party was to march towards BJP headquarters, but they were stopped right at the gates of the Aam Aadmi Party headquarters, and this is perhaps the reason that they have started the protest, and in fact they are sitting on dharna right on Deen Dayal Upadhyay Marg. In fact, police is asking them, requesting them to vacate the road. They can shift to the other side of the road, but they are not ready, and in fact the protest is currently underway. As you rightly mentioned, violence broke out inside the house on Friday, and in fact there were altercation also because BJP wanted BJP Parshads to take oath first, and Aam Aadmi Party wanted their Parshads to take oath first. So the altercation broke out, and in fact since then allegations and counter allegations are coming from both the end. BJP has to say that Aam Aadmi Party Parshads are not consolidated. There is an internal rift, to which Aam Aadmi Party has to say that BJP is deliberately attempting to derail the process of the election of mayor inside the house. Also remember that in MCD, the Parshads can vote for any party. Anti-defection law doesn't apply in MCD, and this is perhaps the reason that in fact BJP is also trying their best to get the seat of mayor. Now the protest is right now underway, and you can see the placards that Aam Aadmi Party कार्यकर्ताs are holding. भाजपा वालों शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो. So in large numbers, the Aam Aadmi Party कार्यकर्ताs have gathered here. We'll try to speak to some of them. सर, ये बताइए, आज आप लोग यहाँ दीन दयाल उपाध्याय मार्ग में हैं, बड़ी तादाद में आए हुए हैं. क्या आरोप है बीजेपी पे? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आपके खुद के पार्षद आपके साथ नहीं है, इसीलिए डिले हो रहा है. लड़ाई झगड़ा भी हो गया हाउस में. अब क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी वाले दूसरी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या चाहती है? दिल्ली की जनता को मेयर कब मिलेगा? भाई देखो, बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ चोर दरवाजे से घुसना जानते हैं. वो लोग नॉमिनेटेड जो काउंसिलर है उनका वोटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं रमेश वगैरह 2 बार काउंसिलर रहा हूँ, कभी भी नॉमिनेटेड काउंसिलर की वोटिंग नहीं होती अंदर सदन के अंदर. लेकिन ये लोग सिर्फ धांधलेबाजी करके इस टाइम मतलब चोर दरवाजे से अंदर घुसना चाहते हैं. और आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि दिल्ली की जनता ने पूरा मैंडेट दिया है, पूरा बहुमत दिया है दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी. ये दिखाइए जरा. अच्छा, ये भी प्लेकार्ड लेके आए हैं. आई एम आस्किंग हिम, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा? बिकॉज आई हैव नेवर सीन फाइट फॉर अ मेयर post like this, the way it is happening in the national capital. We'll take that question across to some other Aam Aadmi Party कार्यकर्ता and try to understand कि वो कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं. वो सबसे बड़ा यहाँ पे है. सर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? काउंसलर नहीं है, काउंसलर है. सर, ये बताइए कि दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी वाले दूसरी जगह प्रोटेस्ट कर, दिल्ली जगह पूछ रही है दिल्ली की जनता कि हमने वोट किया
हमने पार्षद चुने, हमें मेयर कब मिलेगा, काम कब शुरू होगा दिल्ली में? देखिए वो तो एलजी साहब बताएंगे। हम तो तैयार है कि सारे के सारे पार्षद तो तैयार है ना। हमें एक दिन हमने कब मना किया है? हम तो आज ही आप दिल्ली की जनता ने अपना बहुमत दे के लोगों को चुन दिया, उसके बाद भी शपथ ग्रहण क्यों नहीं करा रहे हैं? शपथ ग्रहण में आज तक जब शपथ ग्रहण हो रही तो बवाल हो गया हाउस ये बवाल हुआ तो एक संविधान के लिए संवैधानिक का जब उल्लंघन करोगे तो बवाल ही होगा ना। तो मनोनीत पार्षदों को जब क्या जल्दी थी कि भाई, लेकिन लड़ाई ये थी ना कि पहले ओथ बीजेपी ले या पहले ओथ आम आदमी पार्टी। जैसे पिछली बार ली थी, वार्ड नंबर से लो ना, 1 से लेके 250 तक लो। जब 250 वार्ड पूरे हो जाए उसके बाद अपना वो है, उसके बाद करो ना नोमिनेट को। तो लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है एमसीडी में तो बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है कि मेयर का पद उनको मिल जाए। नहीं, ये तो दुर्भाग्य, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया जब आम आदमी को पूरा। तो उसके पहले उनकी स्टेटमेंट थी कि हम मेंबर चुनाव नहीं लड़ा रहे, फिर उन्होंने क्या भाग ऐसा जो उन्होंने पर्चा भरवा दिया। ये एलजी साहब गलत। एलजी साहब से आप? मैं रमेश नगर से हूँ। रमेश नगर से। एलजी साहब ने 11 नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं लोगों को अपना एल्डरमैन बना के घोषित किया। संविधान में लिखा हुआ है कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं। तो एलजी साहब जो हैं संविधान की हत्या कर रहे हैं। एलजी साहब एज ए बीजेपी का मेंबर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी, आप तो बता रहे हैं कि बीजेपी संविधान की हत्या करे। बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके खुद के पार्षद हमारे साथ हाथ मिला चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जो कि बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे हर पार्टी को खरीदने की कोशिश की। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, पार्षद है जो कि बिकने को राजी नहीं आप भी है। सक्रिय राजनीति में है? बिल्कुल, जब से पार्टी बनी है अन्ना आंदोलन से हम बिल्कुल। अच्छा, अन्ना आंदोलन। अच्छा, ये बताइए मेरे को पहले कि अभी ये इसके आगे तो जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या रणनीति रहेगी? आप लोगों ने तो कहा था कि बीजेपी ऑफिस का घेराव करेंगे। बिल्कुल। तो अभी यही धरने पे बैठे हुए हैं। नहीं, धरने पे बैठे हैं हम, पूरा उनके ऑफिस के आगे घेराव करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जनता ने हमें मैंडेट दिया है, अब उस मैंडेट के खिलाफ एलजी साहब चाह रहे हैं कि एमसीडी इनके बीजेपी के पास रहे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? Okay, so it's a full-blown war between two parties. Yes. Allegations and counter-allegations are coming from both sides. AAP has to say that BJP is derailing the entire process. BJP has to say there is an internal rift in AAP, and this is perhaps the reason that ultimately the people of Delhi, the common man of Delhi is suffering, and they are not getting the mayor. Oh, absolutely. Also, there is a traffic jam on Deen Dayal Upadhyay Marg. Absolutely. Back to you. Siddhant, stay on with us. Let me take this across to Arun Dhanta as well, who's also joining us live on the broadcast. Arun, I believe you are at the location where the BJP members are protesting. Now, essentially, the point that Siddhant was also raising, the MCD is not a legislature. The DMC Act, the amended one of 2022, makes matters difficult for the Aam Aadmi Party. Other political parties have also faced similar situations in the past. And now that the entire power is vested with the centre and hence the LG, is this advantage BJP? Why are they protesting? जनता के बीच में जाते हैं और ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो माहौल बदलेंगे, व्यवस्थाएं बदलेंगे। Well, see, what BJP is saying is that, when the oath taking was taking place and the aldermen, the nominated councillors were given time to take oath first, that is something which Aam Aadmi Party did not like. They were saying that all those councillors who are chosen by people, why they were not, called first to take the oath. And therefore, of course, we know that they will not have the councillors, nominated councillors, will not have a role to play in the mayor or deputy mayor's election. But importantly, they will have a say in the standing committee, and that is something which BJP knows, and they know the importance of the standing committee, and therefore, both Aam Aadmi Party and BJP have been mounting pressure on both of them. Right behind me, you can see a huge crowd of Bharatiya Janata Party karyakartas who have gathered here near the Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, and they are planning